हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द सेशन। आज की वीडियो में आप कवर करने वाले हैं सेल्सफोर्स एडमिन को पार्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एज ए इंटरव्यूअर, एज ए फ्रेशर, एज ए डेवलपर। आपके लिए सेल्सफोर्स एडमिन के इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और आपको ये सीरीज बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर इफ यू स्किप एनी टॉपिक देन यू विल मे बी लॉस द क्वेश्चन। So don't skip the tutorial and let's start. And before that, if you guys have not subscribed my channel, then guys subscribe my channel. So let's start our Salesforce admin interview question and answer. That is going to be more than 1 hour video. I think, I don't know. I'm just guessing. So let's start. Dun, dun, this is our first question from this. So define Salesforce CRM and explain its primary purpose. सेल्सफोर्स सीआरएम क्या है और इसका प्राइमरी पर्पज क्या है सेल्सफोर्स में, जो कि हम देखने वाले हैं। सो यू गाइज नो द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएम. सीआरएम इज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट that is used to manage customer relationship. How customer and client have their relationship, how can we manage the relationship, that is CRM. And Salesforce is जो कि वर्ड बेस्ड CRM प्लेटफॉर्म that use CRM. सो एक क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप जो कि सेल्सफोर्स है, एक क्लाउड बेस्ड है और सारा वर्क यहाँ पे क्लाउड में होता है। क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिलीवर एज ए SaaS, जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है। सेल्सफोर्स एक अपने आप में सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड इट्स वर्क ऑन क्लाउड एंड यूज टू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट and centralize customer data across sales, service and marketing team. Salesforce में क्या होता है, 360 डिग्री पे वर्क करता है, यानी कि सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल दिख जाएगा। अगर आप बात करें सेल्स टीम के रिकॉर्ड्स की, सर्विस टीम, मार्केटिंग, every team work can work on the same platform. They can, I think, share their records without any problem. Everything is centralized on one platform. That's why it's called 360 degree view. And the purpose of Salesforce is build a strong relationship. It is a CRM, so you should build relationship. And Salesforce is used for build a strong relationship with their clients, streamline process, it or handle all the process, all the records in very maintaining way and driven growth and help to grow your business. Now let's move to the next question. What are standard object in Salesforce? Salesforce में standard object क्या है और आपको एग्जांपल देके समझाना है. So, do you know the standard object? If you have remember, if you know about Salesforce, that you have listened about standard object and custom object. Standard object are the pre-built object that come out of the box with every Salesforce org. जब भी आप अपना Salesforce का org बनाते हो तो वहां पे आपको कुछ objects पहले से प्री डिफाइन मिलते हैं, वो होते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. And the name is like account, contact, lead, opportunity, campaign, case, payment, and there are a lot of objects that are standard object. And used to support CRM process, जो कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं. आपकी एक CRM प्रोसेस जो Salesforce के साथ बिल्ड होती है, उसको हैंडल करने के लिए विदाउट एनी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आपको वहां पे कुछ भी मैनुअली करना नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली हैंडल करने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट वर्क करता है. So now let's move to the next question. Differentiate between standard field and custom field. This question is very important because you guys have listened about custom and standard object, but I don't think you have know that there are standard field and custom fields are also available. So as custom object and standard objects, the fields are also standard and custom. The fields that is predefined by Salesforce represent by your default cannot be deleted.
जो आपके सेल्स फोर्स में पहले से प्री डिफाइन है और वहां पे जो डिफॉल्ट है उनको आप डिलीट नहीं कर सकते, वो होती है आपकी स्टैंडर्ड फील्ड। एंड कस्टम फील्ड्स जो आप खुद से क्रिएट करोगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो होती है कस्टम फील्ड। And if I will talk about how you differentiate standard field and custom fields, that you can see the underscore C suffix in both standard object and in standard field. So this is a very important question. Every question is important, but this is really, really important. So now let's move to the next question. Explain the concept of data security in Salesforce. This is the most, I will say, very, very important question in Salesforce. Data security. You guys know about the data security. अगर हम बात करें कि आज की जो एरा है इसमें डेटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके जो भी फोटोज, इमेजेस, वीडियोज या फिर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो वहां से आपके फोटोज लीक होने के चांसेस होते हैं। So data security is very important in every field, in every app, every website, everywhere in the stack field. तो Salesforce में डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल करता है। इसमें एक लेयर स्ट्रक्चर होती है, लेयर मॉडल होता है जो कि परमिशन देता है, who can see, who can edit, who can read your records. तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? सो देयर आर फोर लेयर्स यूज इन डेटा सिक्योरिटी इन Salesforce. First is organization level security. That is org level security, org, that control your login address, your IP range, your login hours when you log in your Salesforce org, how can you edit and customize your password. Everything is controlled by this organization level security. And second is object level security. Object level security gives the permission which object visible to other user, how much action he can perform. And it is controlled by your profiles where you can give uh, access for performing CRUD operation, that is create, update, read and delete. And third is field level security, that is called FLS. Field level security is controlled by your page layout, your profile, and your permissions. In page layout, you can differentiate how much, which fields are visible and read only. Also, from the profile, you can give access to which field is visible to other user or not. And fourth is record level security. That is most important, and every questions will be conducted, will be asked, every scenario that are going to be asked you, that may be from object level security and record level security, because record level security can be controlled by using multiple tools, like I will talk about scene setting, organization by default, that is OWD, and role hierarchy, profile. So manual sharing, these are controlled by your record level security. To which user you want to share your record manually, which user you want to give access for all records, which user you want to give access based on their role hierarchy. Everything is controlled in record level security. And each layer narrow access further from the whole org down to single records. आपकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें इन लेयर से ही कंट्रोल होती है। Now let's move to the next question, that is what is web to lead and how does it work? Have you guys listened web to lead in Salesforce? So web to lead is the feature that generates HTML code for a website form. You can generate HTML code without writing any HTML syntax, without to know how HTML look like. You can generate your form, and whenever visitors submit the form, the Salesforce automatically create record in your object, lead object. And
This lead form is also helpful to remove the duplicate values, re-entries, and capture the data and directly create record in your CRM. And if you don't know how to create web to lead form, then go back. You can check my video, short video that is for web to lead. Now let's move to the next question. Define the case object and its importance in support, customer support. Case object क्या है? Did you know this is the case object is the standard object that is predefined by Salesforce because this is used in your service cloud where the case object handle the customers' questions, their problems, their feedback, and provide them the proper solution. And core object of this is the core object of Service Cloud customer request. Now let's move to the next question. So explain the difference between report and dashboard. This is a very important question that every interviewer will going to ask you. So what is report? Uh, report is the list on your records using some filters, some group, using some different type of records. So report is the detailed filterable list of data in tabular of group form. And dashboard is the visual representation of your report components. How can you design your reports? How can in which visual will like chart, graph, file, matrix, table, in which types you want to display your report, that is dashboard. And report always work on what is data. डेटा क्या है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कौन सा फिल्टर उस पर यूज करना है वो होगा आपका रिपोर्ट और उसको कैसे दिखाना है how to show it, that is dashboard. This is a very important question. Now let's move to the next question. What are the different type of reports in Salesforce? This is the most important question. वैसे तो सारे questions important है, but ये बहुत ज़्यादा important question है. How many type of reports in Salesforce? There are four type of reports in Salesforce. First is tabular report. This is the simple row by row list report. Good for export your data. It is very simple, no group, no filter and nothing. It's very simple format. No condition used in tabular report. And second is summary report. Summary report is used when you group by row and use subtotals based on your fields. You have created filter on group and row. That time you are creating a summary report. And third is matrix report. Just like matrix in math using row and column, also matrix using Salesforce based on group by row and columns. Whenever you use row and column, that time you are creating a matrix report. And fourth one is joint report. Joint reports used to compare between multiple reports based on block. You can compare multiple reports and see them in one platform, that is joint report. And remember the most important thing, that is in you can create dashboard only summary report and matrix report. If you are creating a tabular report and joint report, that time you cannot create any dashboard. So now let's move to the next question.
Define the dashboard component and give an example. Which components are used in dashboard? There are multiple components you can see in your dashboard. So dashboard is simply a visual representation how you can represent your data using chart, graph, pie, matrix, table. This is the format you can. This is the components you can use in your dashboard. And multiple components, whenever you use multiple components together, give a full perform snapshot. That time you are creating a visual dashboard that is really good. You can create a attractive dashboard using based on multiple components. Work at it together. Now let's move to the next question that is gonna be very important question, that is page layout. What is page layout? Page layout control how your field, your button, your section, your related list, action and app, lightning page is going to be visible on your record page. How can how you want to appear your field button sections on your records page, that is controlled by page layout. And page layout can be assigned based on profile and record type. And save what users see and interact. आप किस तरीके से अपना पेज शो कराते हो, यूजर क्या देखेगा और कैसे उससे इंटरेक्ट करेगा, ये सारी चीजें पेज लेआउट के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं. Now let's move to the next question. Differentiate between page layout and record type. This is a very important question. एज ए फ्रेशर आपसे पूछा ही जाएगा कि पेज लेआउट और रिकॉर्ड टाइप में क्या डिफरेंस होता है, रिकॉर्ड टाइप्स क्या होता है. सो पेज लेआउट कंट्रोल द अरेंजमेंट ऑफ फील्ड बटन सेक्शन एंड लिस्ट, एंड रिकॉर्ड टाइप कंट्रोल अवेलेबल पिक लिस्ट एंड बिजनेस प्रोसेस. आप कितनी बिजनेस प्रोसेस एक ऑब्जेक्ट पे बना रहे हो, उनको कैसे कंट्रोल कर रहे हो, कौन सी पिक लिस्ट वैल्यूज वहां पे यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें डिफाइन की जाती है रिकॉर्ड टाइप से. So record type can point to different page layout for profiles. You can assign a record type to a profile based on the different business process. Now let's move to the next question. Explain the use of data import wizard. As you guys know, the word is using here is import. Import meaning like adding something from the different platform. And data import in Salesforce used to get data in Salesforce or from other platform like Excel sheets and some other or some other tool in some other extension. You can import data from the outside of Salesforce or this is the built-in wizard for importing small data values up to 50,000 records. At a time in Salesforce, you can import only 50,000 record in your Salesforce org, that is the limit. And support for both type of object, standard object and custom object based on field mapping. जब भी आप डेटा इंपोर्ट करते हो तो आप स्टैंडर्ड फील्ड एंड कस्टम फील्ड्स यूज कर सकते हैं एंड यू हैव टू बी मैप द फील्ड्स. एंड रिमेंबर, whenever you are importing the data, that time the data import wizard is used only for simple process, not for complex records, complex transformation. If the process is complex, your project is complex, that time you cannot import data using data import wizard. Now let's move to the next question, that is also the updated version of the data import, that is data loader. So why data loader is used and when should it be used?
So data loader is the updated version of data import. In data loader, you can use data loader can be used for complex transformation, used for large scale data, used for bulkified data, and whenever you want to perform DML operation in your all data and want to use bulk data, you have to use data loader. And it can be handle large volume up to millions of records. Data import have limit up to 50,000 records, but in data loader you can import up to millions of records. Used for complex, large scale or scheduled data operations via CLI. Now let's move to the next question. So define record type and explain their role in Salesforce. Record type, that is a very important question, so remember this. So record type. Record type let you offer different business process on a single object. Using the record type, you can create multiple business process according to your requirement on the single object. And it controlled by pick list values and page layout. Assign the page layout. The example is separate record type for billing and technical cases. You can make different page for billing section and technical cases also using the record type. Now let's move to the next question. What are validation rule? Give an example. Validation rule are formula-based rule that enforce data quality before a record set. जब भी आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हो और उस टाइम आपका डेटा सही हो, ये चेक करेगा वैलिडेशन रूल। आप क्या एंट्री फिल आउट कर रहे हो और कहीं गलत तो नहीं डाल दिया, ये सारी चीजें चेक होती हैं वैलिडेशन रूल के थ्रू। इफ द क्राइटेरिया इवेलुएट ट्रू, अगर आपने जो भी डेटा फिल किया है वो सही है, then data will be safe, and if not, that its data is blocked, an error message so there. Example, like whenever you fill the phone number field and email format, and if you add some character in number, that time error will be so that phone number must be in number, and fill out the proper format of your Gmail. And same like close date on opportunity cannot be earlier than today. This is the example. Now let's move to the next question. Explain the importance of object limit in Salesforce. As you guys know that Salesforce is a multi-tenant platform where multiple users work on the same platform at the same time. So the object limits protect platform performance because multiple users work on same time, their scalability and stability. And Salesforce enforce limits on field, object, store, storage, validation rule, records, everywhere. Admin must design within limits to avoid hitting them at skills. जो आपका Salesforce admin है वो उस टाइप से डिजाइन किया गया है कि आप वहां पे जो ऑब्जेक्ट लिमिट्स हैं उनको हिट ना कर सको। जब भी आप उसकी लिमिट्स को हिट कर देते हो तो वहां पे आप नए रिकॉर्ड्स या फिर मैं बोलूँ नए ऑब्जेक्ट्स नए फील्ड्स क्रिएट नहीं कर पाते। Now let's move to the next question. Define profile and their role in security. This is the most important question, profile and role. So profile is the baseline permissions that every user have. This is mandatory for all. Whenever you are creating a Salesforce or a user, that time you have to be you have to choose the profile because profile is mandatory for all users. What
role is not. And profile used in data security to control object level security and field level security to visibility of app tabs and default page layouts. Every user is assigned exactly one profiles and every user is assigned exactly one role. Now let's move to the next question. What is the difference between role and permission sets? Before explaining the role and permission set, let me tell you what is permission set. Permission set are the extra permissions without changing into their profiles. आपकी जो भी profiles है उसमें बिना changes किए को आपको नए permissions देना होता है permission set, नए rules बनाना. द रोल जो होता है आपके बॉटम टू अप टॉप टू बॉटम चलता है एक की जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनका क्या रोल है किस रोल पे वो वर्क कर रहे हैं और कैसे कंट्रोल होगा वो होगा रिकॉर्ड लेवल रिकॉर्ड अपने किस रोल के अकॉर्डिंग विजिबल होंगे वो कंट्रोल होता है रोल हायरार्की के थ्रू so control record level visibility through the role hierarchy and permission set are the grant extra object field or system permissions without changing in their profile a user have one role but can be assigned multiple profile permission set. And remember, profile is also assigned to every user, and every user can have only one profile. Now, let's move to the next question. Explain field level security with an example. So, field level security control how which fields is visible, which field is editable according to their profile. Work even if the user have access to the object itself. ये सिर्फ तभी वर्क करेगा जब आपके जो ऑब्जेक्ट का एक्सेस होगा एन एग्जांपल हाइडिंग सैलरी फ्रॉम द सेल्स प्रोफाइल because sales profile does not have to know about your salary because sales manager have work hmm, which product say is getting more performance how to sell the product they don't need to know how much salary you are getting. So hiding the salary field from the sales profile. Now let's move to the next question. What are sharing rule and why are they used? Sharing rule is used for automatically extend record access beyond their by default and role hierarchy. Sharing rule होता है just opposite of organization by default OWD and role hierarchy. And this is grant access for specific public group, role and subordinate. ये आपको परमिशंस देता है रिकॉर्ड विजिबिलिटी की किस ग्रुप के लिए हमें परमिशंस देनी है किस रोल के लिए या किस सबऑर्डिनेट्स के लिए हमें परमिशंस देनी है वो कंट्रोल होती है शेयरिंग रूल के थ्रू and used when default visibility is too restrictive for business need. जब भी आपका बिजनेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली डेटा सिक्योरिटी को फॉलो कर रहा है तो वहां पे आपको शेयरिंग रूल यूज करना है. Now let's move to the next question. Define app exchange and its role in Salesforce ecosystem. App exchange क्या ऐप एक्सचेंज एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि सेल्सफोर्स में थर्ड पार्टी ऐप है जो आपको डिफाइन करता है हाउ कैन यू यूज ऑन ऑटोमेटिकली या फिर मैं बोलूँ प्री बिल्ड सॉल्यूशंस हाउ कैन यू यूज लाइटनिंग कंपोनेंट्स हाउ कैन यू क्रिएट योर ऐप in and how can you live your app and extend or functionality quickly without building everything from scratch. जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहां पे आपको स्क्रैच से सब कुछ मेंटेन करना होता है लेकिन ऐप एक्सचेंज के थ्रू आप कुछ टूल्स को आप कुछ कोड को वहां से ले सकते हो और
अपना कोड, अपना नया ऐप बिल्ड कर सकते हो। वहां पे आप अपना जो भी ऐप है उसको लाइव कर सकते हो। वो सारी चीजें कंट्रोल होती है ऐप एक्सचेंज के थ्रू। Now let's move to the next question. Explain the concept of Trailhead and its benefits. As you guys know that Trailhead Academy is the online free learning platform provided by the Salesforce. It's help to learn Salesforce, different technologies where you can learn, you can do hands-on challenge, you can earn badges, you can do super set, you can do trails, you can join the events, get the certifications, you can learn. This is the platform built for real skills and prepare learners for Salesforce certification. Now let's move to the next question. What is the difference between the Sales Cloud and Service Cloud? So सेल्स क्लाउड मैनेज लीड अपॉर्चुनिटी एंड सेल्स पाइपलाइन। कैसे आपके पास डेटा आ रहा है, कैसे वो आगे ट्रैक हो रहा है, उसकी क्या आगे प्रोसेसिंग हो रही है, वो कंट्रोल होता है सेल्स क्लाउड के थ्रू। एंड सर्विस क्लाउड मैनेज केस सपोर्ट चैनल्स एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कैसे आप अपने कस्टमर्स को बेटर फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सबको कंट्रोल करता है सर्विस क्लाउड। बोथ शेयर द कोर प्लेटफॉर्म बट टारगेट डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस। जो सेल्स क्लाउड होता है और सर्विस क्लाउड होता है वो सेम प्लेटफॉर्म को लाइक सेल्स फोर्स को वर्क करते हैं, बट इन दोनों का फंक्शनैलिटी और वर्किंग अलग अलग होता है। जैसे कि सेल्स क्लाउड मैनेज करेगा आपकी सेल्स, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी लीड्स कैसे वर्क कर रही है, कैसे सेल्स पाइपलाइन वर्क कर रही है। और सर्विस क्लाउड वर्क करेगा कैसे आप कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे आप अपने सब कस्टमर्स के साथ को जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे आप उनको मैनेज कर सकते हो। वो सारी चीजें मैनेज होती है सेल्स क्लाउड के थ्रू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन मार्केटिंग क्लाउड एंड इट्स यूज केसेस। मार्केटिंग क्लाउड क्या है और उसका क्या यूज केस है? सो मार्केटिंग क्लाउड एज द वर्ड यूज है मार्केटिंग। मार्केटिंग का पर्पज होता है प्रचार करना, प्रचार प्रसार करना। तो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू आप अपने ऐप का या फिर अपनी वेबसाइट का, अपने प्रोडक्ट का कैसे आप ईमेल, सोशल ऐप या व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू आप कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, वो कंट्रोल होता है मार्केटिंग क्लाउड के थ्रू। एंड यूज फॉर पर्सनलाइज कैंपेन्स, कैसे आप कैंपेन चला सकते हो, कैसे आप उसके जर्नी को बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हो, वो सारी चीजें हम मार्केटिंग क्लाउड के थ्रू कंट्रोल करते हैं। Now the next question is explain the importance of data quality and how Salesforce enforces. As the word is mentioned here, data quality. Data quality check that you have the clean data, you don't, the data don't have duplicacy, reliable reports, you are you are creating proper validation rule, proper duplicate rule, matching rules, and require field data fields. कैसे आप अपने डेटा को अच्छा शो कर सकते हो, कैसे आप उसको इन्फोर्स कर सकते हो कि वो प्रॉपर वर्क करे, उसमें डुप्लीकेट डेटा ना हो, उसमें वैलिडेशन प्रॉपरली वर्क करें। ये सारी चीजें कंट्रोल होती है डेटा क्वालिटी में। सो क्लीन एक्यूरेट डेटा ड्राइव रिलायबल रिपोर्ट्स एंड बेटर डिसीजन। जब भी आपके पास डेटा अच्छा होगा, उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होंगे, सारे वैलिडेशंस प्रॉपरली वर्क कर रहे होंगे, आपके फ्लो सारे एक्टिव होंगे एंड प्रॉपर फंक्शनलिटी में होंगे, तो वहां पे आपकी रिपोर्ट्स होंगे और डैशबोर्ड होंगे वो काफी ज्यादा बेटर होंगे और वो आपको प्रिडिक्शन में भी यूज हो सकते हैं। अगर इसका अपोजिट होगा तो आप आपकी रिपोर्ट्स किसी काम की नहीं होंगी, इवन दो आपका जो भी बिजनेस है वो डाउन ऑलरेडी डाउन हो जाएगा। Enforce your validation rule, require field and field data types. वहाँ पे आप कौन से वैलिडेशन रूल लगा रहे हो, कौन से रिक्वायर फील्ड है, उसमें प्रॉपर डेटा टाइप्स यूज किए हैं या नहीं किए हुए, वो सारी चीजें
होती है डेटा क्वालिटी, and use proper duplicate rule, matching rule for further prevent redundant data. आपका जो डेटा है, बेकार डेटा, उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन के लिए हमें डुप्लीकेट रूल और मैचिंग रूल भी यहाँ पे लगाते हैं. So this is for today's session. Thank you class. All the best for your Salesforce admin interview. बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.